So good afternoon, everybody, and welcome to Motilal Oswal's live trading session. Please give me a confirmation in the chat box if I am clearly audible and clearly visible. Great, great. We have confirmations. So thank you for the confirmation, guys, and welcome once again. जैसे कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल ओसवाल दो लाइव ट्रेडिंग सेशंस करवाता है. एक मॉर्निंग सेशन में होता है, एक हमारा आफ्टरनून सेशन होता है. सो हमारा ये जो आफ्टरनून ट्रेडिंग सेशन है, इट विल फोकस ऑन निफ्टीज एक्सपायरी and we will be joined by Miss Shivangi Sharda, who's also known as the Nifty Queen of Motilal Oswal, a very important part of Chandan sir's team. So while Shivangi joins us, कुछ कुछ हमारे जो नए यूजर्स हैं उनको मैं बता दूं. हमारे दो सेशंस होते हैं. सुबह का जो सेशन होता है उसमें हम लोग फोकस करते हैं स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, कन्विक्शन, डिलीवरी आइडिया, स्विंग ट्रेडिंग पे, इंट्राडे पे. तो आज सुबह हमने जो कॉल दिया था टाटा मोटर्स पे, we had initiated an intraday buy on Tata Motors at near 1047. And Tata Motors ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है. Other call that was shared, that was on Varun Beverages. So Varun Beverages also was a profitable call. And जो हमारे पुराने यूजर्स हैं जो हमें इतने टाइम से ज्वाइन कर रहे हैं, they will be knowing कि Miss Shivangi Sharda is on a profitable streak for Nifty. So let's hope कि Miss Shivangi का जो profitable streak है, that continues. So we'll wait for Shivangi to join in. जैसे कि आपको ये भी पता है, हम लोग अभी फोकस करेंगे निफ्टी के कॉल पे, एक्सपायरी 00 कॉल पे हम लोग फोकस करेंगे. तो वी माइट नॉट बी एबल टू टेक ऑल योर स्टॉक क्वेरीज एज ऑफ नाउ, बट अगर निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं है तो इन द लर्न पीरियड विल आल्सो टेक योर स्टॉक क्वेरीज. But our primary focus in this section will be on Nifty expiry, and our Nifty queen, Ms. Shivangi, has joined us. So Shivangi ma'am, can you hear us? Hello, yes, Parth, yes, I can hear you. Ma'am, but we cannot see you, unfortunately. Yeah, just give me half a minute. Yeah, hello ma'am. Yes. So Good afternoon. over to you. Yeah. So welcome to the Thursday expiry session. We've seen that Nifty has fairly recovered from its lower zones. So even though हमने morning में देखा था कि put side में ज़्यादा conviction लग रहा था, we were on the sell side, but we've changed our stance क्योंकि morning dip के बाद हमने देखा है कि recovery काफी अच्छी हुई है. And in fact, from the last two sessions हम यही देख रहे हैं कि जो morning dip है, whatever dip is happening, absorption बहुत quickly हो रहा है at those levels. तो support में काफी bulls active है, काफी strong buying हो रहा है. So that is how we are seeing that any small declines are being captured. Now let's quickly go through the levels. फिर हम trade के बारे में भी बात कर लेंगे. From here. So, okay, I'll just, I think I can you see my screen? Not yet, ma'am. We can see it now. Yeah, okay. Perfect. So, we've seen that पिछले थोड़े घंटे से तो काफी अच्छा रिकवरी है, but daily chart में आ जाते हैं. This is the daily chart of Nifty. And we've seen that, after the budget announcements, उसके बाद से ही there are some pockets, specific sectors जो बहुत strength दिखा रहे हैं. Mainly agro related stocks जो है, auto stocks है, and then there are some of selective pharma names also which are doing quite well. FMCG is fairly holding at its higher zone, mainly because ITC is holding. So कुछ pockets है ऐसे जो काफी अच्छा कर रहे हैं. Infrastructure also can't miss out on that because L&T भी काफी अच्छा weightage रहता है Nifty में उसका. So the reason why we're discussing this, about the stocks is because in सब का weightage है Nifty में. तभी हम देख रहे हैं कि there is recovery, but at the same time Bank Nifty is not performing. Bank Nifty पिछले 9 दिनों से consistently underperform कर रहा है, and weakness can be seen continuing over here. तो इसलिए हमारा conviction जो है Nifty में वो फिर भी अभी स्टांस चेंज करते हुए दिख रहा है बाय ऑन डिप्स के तरफ, बट बैंक निफ्टी में अभी भी हम रेंज बाउंड है, स्लाइटली टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड.
बट ऑफ कोर्स निफ्टी है तो हम निफ्टी के ऑप्शंस पे ही फोकस करेंगे. एंड सो टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट हाफ एन आवर के लेवल्स अगर जो हमें ध्यान रखने हैं, दैट्स 24,350, जो कि एक बहुत सपोर्ट जो है काम करेगा. 24,350 विल बी अ लेवल, एंड ऑन द अपसाइड वी आर लुकिंग एट 24,500. तो इस रेंज के बीच में यू कैन प्ले आउट, एंड काफी अच्छी तरह से हम इसको कैप्चर करने का कोशिश करेंगे, राइट. बैंक निफ्टी के भी लेवल्स को देख लेते हैं हम. ऑल्दो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा, so we are looking at 50,750. ये इंट्रा डे सपोर्ट के लेवल्स पे काम करेगा. 50,750 एंड अपसाइड 51,000 will be a resistance. हम नहीं एक्सपेक्ट करें बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा मूव आए. we obviously only focus on nifty, बट लेवल्स ये हैं जिनके साथ आप प्ले आउट कर सकते हो. ऑफ कोर्स टुडे इज मंथली एक्सपायरी फॉर निफ्टी, तो वॉलेटिलिटी रहेगी. सुबह से हमने देखा है कि स्विंग्स रहे हैं. अगर हम इसका आर्ली चार्ट देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हो कि दिस इज वेयर द डे स्टार्टेड फ्रॉम द इंट्राडे डिप्स. वी सीन वहीं से एक रिकवरी है, एंड वन साइड हमने देखा है कि मार्केट इज रिकवरिंग फ्रॉम दोज लेवल्स. सो समवेयर 24,200 एक्टेड एज अ वेरी गुड बाइंग जोन फॉर द बुल्स. तो यहाँ पे हम पोजिशनली अगर ट्रेड करें तो 24,200 एक सपोर्ट बनते हुए दिखेगा हमारे लिए. एंड जो लेवल्स है अपसाइड वो प्ले आउट करना है. एंड अच्छी बात ये है कि पिछले आधी घंटा से कंसोलिडेट किया है इंडेक्स ने, तो अब जो हमको नेक्स्ट 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में एक ट्रेड मिलने का प्रोबेबिलिटी जो है वो हायर हो जाता है. बट ऑफ कोर्स वील ओनली गिव व्हेन द सेटअप इज राइट. So we are tracking 24,300 ka call option right now, and if necessary we can go for 24,350 also, but right now 24,300 would be on radar. And साथ में हम put भी track कर रहे हैं just to understand the movement of the market, but call side ही हमारा ज़्यादा conviction रहेगा आज के लिए. Now this was about the strikes. Of course I'm tracking. कोई भी एक level, एक entry level अगर हमें मिलता है तो I will of course update. Right now Nifty is trading at near about 24,400. तो हम 24,350 के साथ भी अगर जाएंगे, so that will also kind of play out well for us. तो दोनों ही कॉल ऑप्शंस को मैं ट्रैक कर रही हूँ. टाइम ठीक है बहुत फास्ट होता है, स्पेशली आफ्टर 2 o'clock ऑन एक्सपायरी डेज. सो ऑब्वियसली दैट फैक्टर ऑल्सो हैज टू बी केप्ट इन माइंड, इसलिए हम दोनों कॉल्स को ट्रैक कर रहे हैं. जिसमें कन्विक्शन आएगा we'll go for that. Now let's look at I'll quickly take up a few questions, right? 2-3 questions हम ले लेते हैं. सुबह का अपडेट भी मैं दे देती हूँ. हमने टाटा मोटर्स दिया था सुबह के Tata Motors is what we had given, and 1,050 का हमने targets दिया था. The stock is up by 6% at 1,090 levels. तो यहाँ पे हमारा target भी achieve हुआ, and we are very positive for all the auto and auto ancillary pack. तो बजट में हमेशा हम देखते हैं कि थोड़े बहुत सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी एक व्यू पॉइंट रहता है. सो फॉर दैट मैटर some of the battery related or some of the stocks which are into EV वो भी काफी अच्छे से play out होगा. एंड इस साल का बजट जो है वो रूरल थीम पे जो फंड्स फ्लो है वो ज्यादा हुए थे. सो ऑब्वियसली टू व्हीलर स्पेस जो है वो टू व्हीलर स्पेस हो गए या ट्रैक्टर स्पेस हो गए वो बहुत एक्शन में रहेंगे. So that is why we like this space and continue liking this for the next few months also. So even if you are doing a trading, you can do, even if you are doing a positional call, आप auto space में ले सकते हो. Of course, with the right guidance, आप stock picking जो है वो आप अच्छे से करो. But let's come back to 24,300. 100 के आसपास ही चल रहा है अभी. Not much of a movement here because Nifty भी वही है. अगर हम इसको let's boil it down to 15 minutes frame. तो 15 मिनट्स के फ्रेम में थोड़े बहुत हम देख रहे हैं कि 24,400 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है. सो एज सून एज इट होल्ड्स 24,400 वहां पे हमें कन्विक्शन आएगा फॉर द कॉल साइड. सो वन कैन प्ले आउट दैट. आई एम ऑल्सो ट्रैकिंग अगर हम कुछ स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं इफ देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल.
बट फिलहाल जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 ही बैठ रहा है और इवन इफ वी लुक एट बुल कॉल spread or the other strategies. So 1:1 risk reward के साथ हम नहीं favorable रहेंगे कि हम उसमें करें, right? Okay. So, ma'am, if someone has taken a 24,350 call at 40, would you still suggest holding it? 24,350 अगर आपने 40 में लिया है तो it's okay because 40 is a good price level to enter because अभी around 56 60 के आसपास चल रहा है, so you can still hold it but 30 के आप support को ध्यान रखो. Even when I'm tracking this call, 30 is a level that I'm watching out for. तो वो support लेके आप करो. But of course, we have not initiated any call as of now. तो Right. आप अपने analysis अपने risk से कर रहे हो. Sohil ji is also asking about Bajaj Finserv. This is why Bank Nifty is a little down also because NBFCs have not performed and वो अब give up करते हुए दिख रहे हैं. जितना भी strength बचा था उसमें वो भी give up कर रहा है strength. So that is the reason why Bank Nifty is also underperforming. So we are expecting that यहाँ पे थोड़ा और weakness continue होगा. So ज्ञान प्रकाश जी, वी आर नॉट श्योर आप कौन सा टाटा मोटर्स देख रहे हो. हम लोग जो टाटा मोटर्स देख रहे हैं वो तो 6% अप है. तो probably you are looking at some probably on some wrong app, but हमारा जो टाटा मोटर्स है वो तो 6% अप है. तो I would request you to not spam. Shivangi ma'am, can we take some stock queries or would you be still watching the level? Yes, 2-3 minutes हम stock queries देख लेते हैं. As soon as we get a momentum, I'll just interrupt and go through it. Sure. So I think we have one query on VPRPL. It has run up quite a lot. Okay, yeah, Bhavya ji is asking about VPRPL. So let's just look at this stock again. इसका अगर हम आज का ही चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छा मूव भी दिखा. पिछले 3 दिनों से अच्छा फेयरली मूव हो रहा है. This stock has shown good signs of recovery. एक bottoming it out structure बना है. But let's look at the longer time frame chart. वीकली पे भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी यहाँ पे अप मूव देखने को मिली है. इस हफ्ते 12% 13% अप है स्टॉक. So one can continue holding it for round about 235 and then 250 levels. 250 positional level है, तो ये आप इसको होल्ड कर सकते हो. स्टॉप लॉस जो है वो आप ऊपर की तरफ ट्रेल कर लेना. 220 will be now important क्योंकि जरूरी है कि आप अपना प्रॉफिट्स बुक भी करते रहो, so that you don't just see the profit on screen. आप घर भी लेके जाओ कुछ profit. Right. I'll just quickly give an update on oil as well क्योंकि उसका काफी एक impact रहा है and मैं देख रही हूँ कि काफी जन Sohil is also asking and I saw a lot of queries on oil. So I'll just quickly take up why it's moving today. सारे ही oil counters में अच्छा momentum है, be it Petronet, oil and gas, ONGC, sorry. So entire space looks quite positive और यहाँ अभी हम BTST के तरफ भी देख सकते हैं ये stocks को. The reason we are seeing a good short covering move over here and overall अगर हम देखें weekly basis पे from the last 5-6 weeks these stocks have done good. कोई भी declines में हम देख रहे हैं buying हो रहा है यहाँ पे. So overall long term structure is also quite good, but trading के लिए भी आप ये capture कर सकते हो. So you can look at ONGC for around about 350 immediately and then 380 targets around ONGC के लिए. I think ma'am Madhur sir ने Varun beverages भी दिया था सुबह इंट्राडे के लिए. So if you can share your views on that. Sure. So VBL entire consumption, as I said, बहुत अच्छा लग रहा है and market जब भी थोड़े signs of consolidation या profit booking दिखाता है. So pharma and FMCG, these are the pockets that do quite well. तो ITC आप देख लो या VBL, it's doing quite well. Varun beverages अगर हम देखें तो अब इसका जो previous cluster zone था hurdle का वो surpass किया है stock ने and it is holding above it quite well. So of course this stock is very positive. Immediately अगर आप मुझसे पूछो तो यहाँ पे round about 1700 के levels बन रहे हैं and one can look for this stock as well. Okay.
I'll quickly give a update for the 24,300 call. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Nifty is still at those levels only. It's not crossed 24,400 levels. तो यहाँ पे अगर हम कॉल साइड जाना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट है कि ये 24,400 को क्रॉस करे. We've seen some sort of buying starting over here. तो 24,400 क्रॉस करता है तब हम कंफर्टेबल होंगे इसमें इनिशिएट करने के लिए. बट व्हाट वी कैन डू इज, मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ. 24,350 के कॉल ऑप्शन को अगर हम देखें, राइट नाउ इट्स नियर अबाउट 45. तो आप इसको 35 से 40 के रेंज में हम इसको ट्रैक करेंगे. देन इट विल बी अ कंफर्टेबल बाय. 35 to 40 अगर ये रेंज है इसमें आता है तो वी कैन बाय. एंड टारगेट जो है वो हम इमीडिएटली 65 और फिर 80 तक के लिए वेट कर सकते हैं. So this will be the trade, hero zero trade, 24,350. And what will be the stop loss, ma'am? 30 will be a stop loss. Okay. So guys, we have a fantastic risk reward over here. अगर आप देखोगे जस्ट 10 पॉइंट का या फिर 5 पॉइंट का आपका रिस्क रिवॉर्ड रिस्क है और रिवॉर्ड हम लोग 20 प्लस प्ले कर रहे हैं. तो दैट्स अ फैंटास्टिक रिस्क रिवॉर्ड गाइस. So right now, yeah. So now Nifty is crossed 24,400. So I'm comfortable भी है. So we can look at this trade and we can comfortably do this also. So ma'am, would you suggest buying it at CMB? Yes, अभी चल रहा है फिलहाल. I'll just yes, we can go for buying this. अभी 50 के आसपास चल रहा है. Guys, now that we are tracking the calls closely, we will not be taking stock queries for a while. Yes. So 24,400 will be 24,350. I beg your pardon. 24,350 will be the hero zero call for the day. इसको हम play out कर सकते हैं. We are now comfortable because Nifty is somewhere holding near 24,400. Although आज के ट्रेड में आई वुड सजेस्ट कि आप अपना पोजीशन साइजिंग जो है वो आप कम की तरफ रखो, बिकॉज कन्विक्शन इज नॉट जो हमारा पूरा कन्विक्शन नहीं है. सो वी वुड सजेस्ट यू कैन टेक द कॉल बट कीप योर रिस्क रिवॉर्ड ऑल्सो इन हैंड. निफ्टी का जो मूवमेंट है काफी स्लो एंड स्टैगर्ड रहा है पूरे दिन में. So and option अगर swings हमें capture करना है, so it requires कि बहुत ही swift या fast movement आए, which is not seen today, even though it's monthly expiry जो हम expect कर रहे थे कि swings हुए, because every time we do see there is wild swings on either sides monthly के time पे. So don't go all in. That's what I would recommend. But yes, this trade looks good for a few point swing. कुछ points के swing के लिए आप ये trade कर सकते हो. So right now 24,350 is at 55. Nifty भी hold कर रहा है 24,400 के आसपास. But call DK will also have. Nifty is right now हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत towards a positive आ रहा है. पूरे दिन के एक कोशिश के बाद एक गैप डाउन पूरा जो हुआ था वो फिल करते हुए देख रहा है. इफ यू लुक एट द डेली फ्रेम दैट आई शो यू, पूरा जो नेगेटिव ओपन हुआ था वो अब पॉजिटिव जा रहा है निफ्टी, एंड नाउ स्लोली इट्स कमिंग इन द ग्रीन. सो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत है एट द सपोर्ट जोन. एक इम्पॉर्टेंट data point here which I observed in the last 3-4 sessions is that there is one data called Nifty put call ratio, which basically means कि जितने लोगों ने put sell किया हुआ है और जितने लोगों ने call sell किया हुआ है उसका एक ratio निकालते हैं. So basically ये ratio अभी पिछले 3-4 दिन से ये indicate कर रहा है कि even though market is correcting from the last 4 days profit booking जो भी हमें देखने को मिला है, even though that's happening, but put writers or put sellers are not giving up. That means कि जो put बेच के खड़े हैं वो
यही एक्सपेक्ट करे कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है या उनको पकड़ के रखे है लेवल्स को. सो दिस इंडिकेट्स दैट कोई भी सेल ऑफ भी हो रहा है तो वहां पे पुट राइटर्स बचाने आ जा रहे हैं. पुट सेलर्स दिस इज जस्ट अ डेरिवेटिव पॉइंट, डेटा पॉइंट जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये कन्विक्शन हमें दे रहा है. बहुत टेक्निकली भी हम देख रहे हैं, डेरिवेटिव्स भी देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं. तो यहीं से by looking at multiple things we get conviction. But of course price is the most important thing to look at. काफी अच्छी तरह से 24,400 के ऊपर होल्ड कर रहा है. And now we are seeing that the call option is also at 56 58 levels. तो यहाँ पे एक अच्छा कंफर्टेबल आपका बाइंग, क्योंकि बाइंग के रेंज में भी हमें कंफर्टेबली प्राइस मिला. एंड राइट नाउ वी आर सीइंग अ अप मूव आल्सो ओवर हियर. फिलहाल द ऑप्शन इज एट 60 राइट नाउ. सो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 65 के आसपास आ रहा है, एंड देन वी कैन वेट. सो yeah, we are just tracking that, but I think we can quickly take up a couple of questions. वो call So तो the हम first track कर question is ही on Wipro. Okay, Wipro. So IT stocks have been the supporters for Nifty from the last 1 month. और स्पेशली अर्निंग सीजन्स के टाइम पे हम देखते हैं यहाँ पे बहुत वॉलिटिलिटी होता है. एंड पीपल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द अर्निंग्स मूव. बट फंडामेंटली हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि these stocks have not performed from a really long period of time. तो काफी सालों के कंसोलिडेशन के बाद अब जब थोड़ा रैली आ रहा है वहां पे वी आर विटनेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग 3-4 दिनों से. बट ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे मिड कैप आईटी स्पेस में ज्यादा है एज कम्पेयर टू the heavyweight. So be with the selective IT space जहाँ पे strength है, rather than trying to catch the heavyweights. Right. So right now the call is moving around वही zones पे है. And I would suggest कि okay, I'll just quickly look at the levels also. 24,400 के पास ही है Nifty. And I would quickly suggest that आप थोड़े बहुत profits book कर सकते हो, because momentum जो है वो lose होते जा रहा है. It's already 253. तो थोड़े बहुत profits आप book करते रहो, right? Because जैसा कि मैंने कहा वो staggered movement रहा है पूरे दिन. So बहुत strength लग रही है move upwards होने में भी. Although we are in green right now, almost in green right now, but of course strength बहुत लग रही है. So yes, I would suggest keep booking. So any BTST stocks, ma'am, for the day? Yes. So for the BTST, I'll just look at a few stocks. Tata Motors is still looking positive. तो आप टाटा मोटर्स आपने अगर मॉर्निंग के भी स्विंग में लिया हुआ होगा तो भी आपने अच्छा कैप्चर कर लिया होगा. Stock is up by around 6.5%, but it's still looking positive. So one can look for this stock for BTST. 1120 के टारगेट्स यहाँ पे बनेंगे. Okay. I think the other stock query is on Oil India Limited. Okay, oil and gas जो हमने डिस्कस किया काफी पॉजिटिव है. बट डेफिनेटली ऑयल स्पेस में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ONGC विल बी अ बेटर पिक दैन ऑयल इंडिया. क्योंकि ऑयल इंडिया जो है काफी स्टैगर्ड वे में मूव करता है. एंड अभी फिलहाल हमने इसमें नेगेशन देखा है. बट डेफिनेटली आई थिंक टू बी विद द sector you have to be with the prominent the strength ones rather than just trying to play the sector. हमें strength के साथ भी play करना चाहिए, जो कि एक बहुत important है stock picking में. So I think ONGC will be a better.
So I think many people have already missed out on the trade. 35 to 40 का लेवल नहीं आया था तो हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था. जिन्होंने सीएमपी पे बाय किया था, गाइस यू कैन बुक सम प्रॉफिट्स. एंड जिन लोगों ने वो नहीं लिया तो मार्केट हमेशा रहेगा. हम लोग भी हमेशा रहेंगे. हर रोज एक एक्सपायरी हो रहा है मार्केट में गाइस. तो जरूरी नहीं है कि अगर आज आपने ट्रेड मिस किया तो देयर विल नॉट बी एनी अपॉर्चुनिटी टुमारो. तो जस्ट ट्रीट इट एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी और कल फिर से आप ट्रेड ले सकते हो. Ma'am, the other query is on BDL, bought at 1497. I'll just look at BTL as well. So BDL का अगर हम डेली स्ट्रक्चर देखें, it's kind of giving up on its पिछले कुछ हफ्तों का जो गेन्स है वो पिछले 2 हफ्तों में गिव अप करते हुए दिखा है. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन द PSU या डिफेंस आप बोल सकते हो. तो तब तब काफी अच्छा एक्शन था एंड मोमेंटम था. बट for the budget there hasn't been much talks about the defense space. Of course overall long term अगर आप investor हो तो कोई problem नहीं है, but अगर आप trader हो so I would suggest we can exit and we can move into better stocks. Right. So I'll just give a quick update. 24,350 call is now at 55. तो आपने अगर exit नहीं भी किया होगा तो I think buying price के ऊपर ही आपका exit होगा अभी भी. So you all can exit the trade because momentum नहीं है Nifty में clearly. So one can, okay, right now the call is at 58. It's at 60. तो जिन्होंने exit नहीं किया है तो you can exit the trade now. It's at 60 right now. तो आप obviously I think we had discussed near about 50-52 भी अगर आप initiate कर रहे हो right तो आप अभी भी comfortable profit में ही exit कर रहे हो. Okay, someone's writing booked Dhaval, Anupam सब लिख रहे हैं booking profits. Very good, thank you so much. All right. Yeah. Now I think I'll just take up a few stock queries. Basit is asking RVNL. तो हमेशा बहुत सारा होप्स रहता है कि हम बजट के टाइम पे कुछ रेलवे या PSU सेक्टर में कुछ देखें. But this time the entire focus was on the agriculture space. तो आप देखोगे fertilizer space में काफी अच्छा action है. But not much have been said about the railway. Investor हो तो कोई problem नहीं है, but trading में अभी enter करने के लिए मैं नहीं बोलूंगी आपको because momentum नहीं है. On the contrary, अगर आप दीपक नाइट्राइट देखो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा movement मिला है because the budget has been in favor from this entire pocket. तो ये पूरा स्पेस अच्छा लग रहा है. स्पेसिफिकली दीपक नाइट्राइट जो है मुझे बहुत पसंद आ रहा है. सो वन कैन लुक फॉर दिस स्टॉक जो इसका टारगेट्स है 3000 और पोजिशनली 3200 तक का बनते हुए दिख रहा है. सो दिस इज वन स्टॉक व्हिच यू कैन लुक फॉर दीपक नाइट्राइट. I think मैं अपना एक CDI I think हुडको पे भी है, तो if we can have an update on that. Sure. So हुडको अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखो, सो इट्स kind of bounced back really well from its lows. इसका जो एक 270 के आसपास जो क्विक रिकवरी हमने देखा था which has been quite remarkable in this week only. एंड ये अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात ऐसी हो रहे हैं. इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि मार्केट हैड गिवन अ रिएक्शन फॉर द बजट, बट वो रिएक्शन जो था ऑफ कोर्स बजट हैज नॉट बीन very favorable for some of the financial companies. बट जो बाकी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं जो रिएक्शन था वो क्विकली बाय इन हो गया. सो पीपल आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट टू बाय द गुड स्टॉक्स एट लोअर लेवल्स, which is a very which indicates that हम बहुत ही mature मार्केट में हैं और हम बहुत mature traders investors के साथ हैं. So even if you talk about this stock Hudko, बहुत अच्छा रिकवरी हुआ एंड फ्रॉम द लास्ट 2 days also it's doing fairly good. So positionally CDI call है हमारा. Positionally the stock has no problem, looking very nice. अगर आप technically बात करो immediately 350 तक के
टारगेट जो है वो हम देख सकते हैं स्टॉक में. So, ma'am, will there be any option re-entry because we are seeing some momentum in the option? Yes, so as I'm going to I'm just tracking this also 24,350. तो फिलहाल the option is at 55 only. तो हमने देखा है कि पिछले 15 मिनट से ये 50 to 60 के रेंज में चल रहा है, but it's not being able to surpass 60. इनफैक्ट हमारा टारगेट था 65 का, बट वहां तक नहीं जा पाया, 60 के आने तक रुक जा रहा है. So momentum is there, but the speed is not so much. तो ये 50 to 60 के रेंज में अगर किसी को प्ले आउट करना है तो कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई वुड सजेस्ट कि 3 o'clock हो गया है and momentum is very low, so time decay will happen very quickly, so better you can avoid. हमारे पास महीने में 4 एक्सपायरीज होते हैं निफ्टी में, आप फिर भी you can try for the next week itself. और हमारे पास हफ्ते में भी इतने सारे एक्सपायरी होते हैं, every day is now expiry day. So I'm sure Stockamo and this entire platform helps you to get the expert opinion, live trading, live market के time पे. So don't try to be greedy. आप correct setup और correct momentum के साथ ही आप play out करो for the best risk reward trade. And guys, as ma'am mentioned, the entire team is here to to help you with the right trades. But we would request you do not spam your queries. As you know, this is a free platform. We have so many participants, so it's difficult to take all the queries in one single session. So you can post your queries on Stockomo, and our experts will definitely reply to you over there as well. So if any of your queries are not taken during the session, please post them on the platform, and we'll be more than happy to answer them. आई थिंक देवेंद्र जी का एक क्वेरी था, देवेंद्र जी का क्वेरी था कोफोस पे और इंडिजन पे, तो मैम इफ यू कैन टेक दैट. I'll just quickly give an update on Coforge. Stock काफी positive है, and if you're holding, you can continue holding. 6250 एक important support होगा, जो कि आप इसको एक ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस को 6250 का लेवल जो है. And upside, you can look for round about 6500 and then 6600 levels. And ma'am, one last query, if you can take it up, Indigen. So if I look at Indigo is what you said? Indigen. INDEGEN. Okay. Okay. So we've seen यहाँ पे अच्छा it's a new stock of course, so we don't have much data. पुराना जो historical data है वो ज़्यादा नहीं है available, but आज अच्छा momentum है. I feel one can look at the kind of activity the company does. आप fundamentally आप इसको देख के try करो research करने का, but technically it's difficult to say because of the less data that is available, but momentum is there. तो आप इसको आप अगर आप होल्ड कर रहे हो तो you can continue holding. Stop loss जरूर ट्रेल करना, but fresh entry के लिए please do your research and then enter, because volumes यहाँ पे थोड़े shallow है, so it's difficult to talk technically about this. Sure, ma'am. And ma'am, just before you go, I mean, before we wrap up, can you please share the BTST calls as well? काफी लोगों ने बाद में join किया होगा, तो they might have missed out on it. If I remember, Tata Motors was one of our BTST calls. Yes. So for the BTST calls, we are looking at Tata Motors, and in fact ONGC भी काफी अच्छा लग रहा है. But for the BTST, we have LIC, which is one more stock which is looking quite positive. तो LIC के stock को हम देख सकते हैं. Now there is a lot of momentum in insurance space stocks जो बहुत ही अच्छा play out भी कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, and LIC is also one stock which is looking quite positive. अगर हम इसका weekly structure भी देखें तो पिछले 4 weeks से consistently यहाँ पे अपना base higher zones की तरफ shift कर रहा है ये stock. RSI is also showing a positive divergence here. So LIC would be the BTST call.
1195 टारगेट्स एंड 1145 के एक स्टॉप के साथ. Okay. So thank you, ma'am. Thanks a lot for your time and thank you for a profitable trade on a day which looked quite difficult. So thank you once again, and you have hold on to your title of Nifty Queen. So thank you once again, ma'am. And Thank you guys, we'll so be much. wrapping up this session. Yeah, thank you so much, Parth. And I would like to take this chance कि आप और आपकी पूरी टीम इतने अच्छी तरह से स्टॉकहोम प्लेटफॉर्म पे आप इतने सारे लोगों को कनेक्ट कर रहे हो एंड यू आर हेल्पिंग सो मेनी पीपल इन द लाइव मार्केट, जो कि एक काफी डिफिकल्ट काम भी होता है. So hats off to the entire team. And guys, stay connected here. हम रोज आके आपको इतने incredible insights देते हैं. And if you attend all the sessions, you might notice that हम कुछ ना कुछ एक वैल्यू इम्पैक्ट भी देते हैं आपको, तो आप एक लर्निंग पॉइंट भी आप लेके जाते हो अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी ऑफ कोर्स. सो Thank you for those kind words, ma'am, and have a good day.